हेलो। आज आमे आम नेक्स्ट लेक्चर रे जो टॉपिक देखिया पई जाउछे हम टॉपिक होची लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो आमे आज कर एजेंडा को आमे देखिवा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, सम बेसिक रूल्स ऑफ लिमिट्स, सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन आमे देखिवा, किछटा स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन मन रखिवा। आफ्टर दैट आमे डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन द्वारा कांसेप्ट बुझिया पई चेष्टा करिवा एवं लास्ट को मु किछटा प्रैक्टिस क्वेश्चन मध्ये आज ऐड करची स्लाइड रे जाकि प्रैक्टिस पई यूज कर परिबे। तो व्हाट इज लिमिट? दिस कॉन्सेप्ट्स एठी जति कॉन्सेप्ट लेखा हेची, these 3 points are just definition of limits, but these are very important and question आ मध्य फ्रेम ही पारि जेमति कि कोच कोन limit fx is the expected value of f at x equal to a given the value of f. Limits ର definition ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଥିବ obviously course sorry ଥିବ obvious कर। तो if x tends to a minus means if f near x to the left of a, then we are calling it left hand limit, and in short I will call it LHL। ମୁଁ ଆକୁ short ରେ LHL କହିବି, LHL ମଧ୍ୟ କହିହବ। And when we expect the value of f at x equal to a near to the right of a, it is called the right hand limit, RHL. So the main concept, the main point is if LHL equal to RHL, if LHL equal to RHL, then limit exists, then limit exists, otherwise limit doesn't exist. If some cases are like if I get LHL is equal to something like 4 and RHL is equal to something like 5, or something like LHL is equal to 0 plus means some positive number, but RHL is equal to 0 minus. That is maybe the case when it is 0, then it can exist. But if it is something like 0.1 and minus 0.1, then limit cannot exist here. So this is the main point. If LHL is not equal to RHL, if LHL is not equal to RHL, we doesn't have any limited there. So this is a main point। यहाँ को मैं यूज करके आगे आगे क्वेश्चन रे मते देखियो जे क्वेश्चन रे केमति यारे यूज करियो। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लाइक्स एवरीथिंग, मैट्रिक्स हो डिफरेंशिएशन हो, लिमिट्स रे मते अलजेब्रा अछि कि लिमिट x टेंड्स टू a fx plus gx or fx minus gx is simply limit x tends to a fx plus minus limit x tends to a gx. We can simply also do that for multiplication and division, like if something like limit x tends to a f divided by g, we can differently compute limit x tends to a f, differently compute limit x tends to a g. If exists, then after that we can just do the division। तापरे कांस्टेंट जदि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन होला तो कांस्टेंट हमें बाहर फाइंड करियो। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स एंड लिमिट अलजेब्रा। So this is the basic definition of limit. We will use basic, आमे basic definition को आगो की यूज करिया क्वेश्चन रे सॉल्व करिया पे। तो लिमिट रो यूज करके डेरिवेटिव आस्ता है। डेरिवेटिव इज आमे जहां पढ़छि कि डेरिवेटिव इज dy dx, सम सिंपल dy dx, एंड आमे फार्मूला मते जानछि कि dy dx of x is equal to 1, dy dx of x square is equal to 2x। तो केमिति आसी डेरिवेटिव ऑफ f at a is defined by this limit। how can I denote? Let me draw a graph। Suppose मोर फंक्शन गोटे एमिति अछि, डेरिवेटिव कोन रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो एटा हला सपोज x इक्वल टू a रो फंक्शन रो वैल्यू एटा, and x equal to a plus h, suppose this is a plus h and x equal to a plus h रो फंक्शन रो वैल्यू एटा। the rate of increase mu कोन f of a plus h, this is this f of a plus h and minus f of a, this value I am calling this value, this value is this, the numerator part, and divided by h, what is h? This value। so what I am trying to compute, मु कोन करिया पय चाहूची कि जतबे हमें कोन सी फंक्शन डेरिवेटिव जानिबा तो केते डिस्टेंस गली केते चेंज होची तार रेट,
जते बहुत छोटो चेंज हो प्रथम धर हम ग्राफ रे we have some graph like this, we do a change like this part then this part जते हमें बहुत infinitesimal like h tends to 0 distance रे हमें change को देखिबा ताको हमें डेरिवेटिव कहबो. So this is also the definition of f dash x. If for h tends to 0, f of x plus h minus f of x is any general x, fine, called the derivative of x and it is called f dash x. Example जदि मु कहिबी, suppose x square डेरिवेटिव आमे केमति करियो. x square डेरिवेटिव पाई फर्स्ट जिंस होची लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h, तो x plus h रो स्क्वायर x plus h रो स्क्वायर x plus h रो स्क्वायर कोन टर्म आसबे x स्क्वायर आसीबो h स्क्वायर आसीबो प्लस 2hx आसीबो 2h x, this is x plus h square minus f of x called x square divided by h, and when h is tending to 0, when h is tending to 0 I need to calculate x square plus h, this limit. So this is cut with this and आमे जानि जे when एबे मु h कैंसिल करि पारि, when न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जदि h कैंसिल कर देबी मो पाखरे कोन रहला h plus 2x divided by 1, तो h plus 2x by 1 और h tends to 0 देछि तो मु काटि पारि तो हम पाखरे कोन आसला 2x. तो आमे प्रीवियसली हमें फार्मूला रो मध्ये जानचे फार्मूला रो हम कोन जानचे जे x to the power n रो डेरिवेटिव हला n x to the power n minus 1, but फार्मूला रो केमिति आछि, this is the derivation, x square रो डेरिवेटिव होछि 2x. So this formula is very important. किछिटा क्वेश्चन रे यूज मध्ये आस्ते, but you need to learn the basics जानिबा बहुत दरकार. Next, useful rules. Constant रहिले simple constant बाहर को आसीबो. This is called the product rule, this is called the division rule, this is called the chain. Mainly तीनटा रूल अछि डिफरेंशिएशन रे, product rule, chain rule, division rule. Product rule को fx into gx रो डेरिवेटिव करले प्रथम fx को कांस्टेंट माने कि gx रेस्पेक्ट रो डेरिवेटिव करिवा, तापर gx को कांस्टेंट माने कि fx रेस्पेक्ट रो डेरिवेटिव करिवा, तापर dy df fx by gx. तो fx by gx रो डेरिवेटिव ता टिके बड़ा फार्मूला जाना पड़छ, gx स्क्वायर gx कांस्टेंट माने कि fx minus this, तो डिराइव करिवा बहुत इजी. You can in this formula, ए फार्मूला रे gx जगह रे 1 by gx रखले, तो 1 by gx रो डेरिवेटिव कोन हबो minus 1 upon g रो स्क्वायर minus 1 upon gx रो स्क्वायर आसीबो ना, तो into g dash x minus 1 upon gx रो स्क्वायर into g dash x, तो ए आसीबो हम फार्मूला. तो ता हिसाब रे हमें सेही बार देख परियो कि ताको भल से डिराइव करले this formula is important and this is called the chain rule. d by df of f of g of x, this is in the previous function lecture देखले, this is called the composition. composition रे डेरिवेटिव केमति जानिबा, composition रे डेरिवेटिव जानिबा पई प्रथमे f dash gx gs को as const x माने कि तापरे भीतर जो फंक्शन रहला तार डेरिवेटिव g dash x. If I have something like f of g of h of x, f of g of h of x, some this, এবং মতে আর ডেরিভেটিভ পচারলা, তো মু কোন করিবি, ফার্স্ট করিবি f dash पूरा this whole thing, then g dash this whole thing hx, g dash hx, then finally h dash x, then finally I will write h dash x. तो एई भला चेन रूल यूज करिकि एंड डिफरेंशिएशन कर परियो, मन रखिया दरकार. देन किछिटा डेरिवेटिव जहा को कि मन रखिले हमको एग्जाम रे बहुत
सुविधा होता है जाकि मन रखिया दरकार दिस इज सिंपल sin x रो cos x रो माइनस sin x tan x रो sec square x और cot x रो माइनस cos square x sec x रो sec x tan x e to the power x रो e to the power x डिराइव करिया मते बहुत इजी ln x is 1 by x देन जो छटा इनवर्स फंक्शन हम पाखरे अछि sin इनवर्स cos इनवर्स ने तार डेरिवेटिव मन रखिया दरकार काई बहुत तार डेरिवेटिव भले डिफरेंशिएशन लिमिट रे बेसी यूज आछता इंटीग्रेशन वे मध्ये बहुत यूज आछता तो this had to be remembered. So at the derivative, this slide you have to remember. I am just highlighting as an important slide. You just have to remember this. Some useful results. We know limits when we are given limits. आपको जैसे एग्जाम में लिमिट दिया है तो evaluate करें. Limit different form में है पर indeterminate forms. जेमती कि suppose 0 by 0 form. लेकिन सब f(x) by gx suppose किसी दिया है थी वो something f upon g f is 0 after g be 0 after but this is called an indeterminate form like 0 by 0 something like infinity by infinity. Another thing is like 0 into infinity. 0 into infinity you can easily convert into 0 by 0. Infinity वाला function को only उल्टा करके लिख ले 1 by infinity tends to 0. Then other indeterminates are 1 to the power infinity. एमती बहुत टाइप रे एटारे किछि किछि हम पाखरे रिजल्ट अछि जे ए टाइप रो हमें थिले हमें किछिटा रिजल्ट अछि ताको यूज कर पारे तो ताको मन रखिले एग्जाम रे बहुत सुविधा द फर्स्ट रिजल्ट इज एल हॉस्पिटल रूल्स जदी लिमिट इज ऑफ द फॉर्म 0 by 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट जदी हम पाखरे जो लिमिट अछि तार हेतिबो आइदर 0 by 0 फॉर्म रो और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ता हमें यूज कर पारे एल हॉस्पिटल एल रूल कोन कोची this result is applicable when the indeterminate form is of this ठीक আছে if limit x tends to a reduces to this then we can write this limit x tends to a fx by gx is equal to limit x tends to a f dash x by g dash x. This is a very important result. This is a very important result. I can highlight this result कि limit x tends to a fx by gx is equal to limit x tends to a f dash x by g dash provided exists माने जदी f dash x g dash x exist करथबो exist करियो बहुत केस रे किछटा केस रे exist न करथा एवं फाइनल हमें केमति पहुंचबा हम आंसर पाकू हमें कंटिन्यू करियो सते जाय विल कंटिन्यू अप टू व्हिच टाइम जे जे इंडिटरमिनेट फॉर्म जाय सपोज प्रथमे 0 by 0 थिला सपोज वी आर कैलकुलेटिंग x to the power 4 divided by sin x to the power 4 sin x to the power 4 so यार लिमिट 1 आसे 1 केमति कहि देले सिंपल x upon sin x to the power 4 is 1 बट हमें जदी एल हॉस्पिटल सॉल्व करि जे प्रथमे क्यूब आसीबो तापरे स्क्वायर आसीबो तापरे कांस्टेंट तापरे कांस्टेंट टर्म आसीबो तो चारि थर एल हॉस्पिटल लगया पे पड़िबो तो दिस रूल इज वेरी यूजफुल किंतु सम टाइम्स आर बहुत ड्रॉबैक मध्ये अछि जाको हमें आगु को देखिबा ए रूल हमें केतबे लगे परिबा नै लगे हबो किंतु बहुत लेंथी लाइक 5 6 थर डेरिवेशन करिया पे पड़िबो थरे एल हॉस्पिटल दुई थर एल हॉस्पिटल तो this rule can be very lengthy. Another rule is there when the our this is 1 to the power infinite. Sorry, I have written 1 by infinity. 1 by infinity formula obviously answer should be 0. This is 1 to the power infinity. When this is wrong, you should forget this. If this is of 1 to the power infinity form, if this is a 1 to the power infinity form, तबे कौन करिवा तो दुई प्रकार रे 1 to the power infinity आसपर सपोज हम पाखरे किछि एमिति अछि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus fx to the power 1 by gx where fx limit x tends to fx is 0 limit x tends to g of x is also 0 जतबे लिमिट x tends to fx भी 0 और लिमिट x tends to gx भी 0 तबे एई जो लिमिट हला सेटा लिमिट x tends to 1 plus fx to the power 1 by gx फॉर्म आसी so this limit can be written
as e to the power limit x tends to a fx by gx. This is very important result. This is another very important result, and this one also. The result is limit x tends to 0, or if it is not 0, always it can be a. If limit x tends to a, 1 plus fx to the power 1 by gx. एठी कोन एटा 1, this is infinite. ताको हमें केमिति लिख परिबा? Limit x tends to a fx by gx, ताको हमें e to the power limit x tends to fx by gx. और हमको सेट टर्म में नथियो, हम पाखरे जणा अछि हमको 1 to the power infinite फॉर्म रे अछि. तो जो fx to the power gx थिवो, fx is 1, gx is infinite. ताको हमें केमिति लिखिबा ताले? तो आमे ताको ब्रेक करिवा, एई फॉर्म रे ब्रेक करिवा. केमिति? 1 plus fx minus 1 आमे लिख परियो. तो हम पाखरे 1 plus something आसी जिवो. जो 1 plus something एठी आसी जिवो हम पाखरे. Suppose some 1 plus something हम पाखरे आसी जिवो. ताक एवं gx टा ऊपर जेमति. ताको हमें फाइनली एमिति लिख परियो कि लिमिट x tends to a fx to the power gx if 1 to the power infinity. This is equivalent. These two are equivalent. If you are given to compute this, हमें इटा compute करियो कि e to the power limit x tends to a fx minus 1 into gx. इटा easy ही पे compute करिया ପାଇଁ କିଛି time रे काई. This is something 0 into infinity. This seems like 0 into infinity. And because fx tends to 1, so fx minus 1 tends to 0, gx is infinity. And if this is 0 tends to infinity, you can just convert it to 0 by 0 or infinity by infinity. तापरे हमें एल हॉस्पिटल यूज करके आराम से सॉल्व कर पारे. तो these two are very important result. ए रिजल्ट और ए रिजल्ट बहुत इंपोर्टेंट. ए रिजल्ट को मन रखिया ପାଇଁ पड़ियो. एवं आरे एग्जांपल जदी मु कहिवा को जेबी गोटे सिंपल एग्जांपल. If I am given limit x tends to 1 x to the power limit x tends to 1 x to the power 1 to the infinity. So suppose 1 by x minus 1. Limit x tends to 1 x to the power 1 by x minus 1. यहाँ को compute करिवा जहाँ, you can similarly compute e to the power limit x tends to 1 fx minus 1, which is what? X minus 1 into gx. What is our gx? 1 by x minus 1. आमर कौन है जीवो? This limit. This is not a limit anymore. Numerator x minus 1, denominator x minus 1 cancel. So we finally got our answer kon asla. Our limit is e to the power 1. E to the power 1 is simple e. So this is a very easy trick to solve limits. This is equal to this. आउ एहा को आउ किछि उपाय रे सॉल्व करिया बोले बहुत कष्ट. यार डेरिवेशन मध्ये अछि ln यूज करके logarithmic यूज करके, but this is a very easy trick and this is very simple to use. This is the example. You can remember, you can find such examples also in some partial questions also and some other questions also. Some useful expansion. Expansion कौन दरकार? हम कहते drawbacks of L hospital. Sometimes if we have sin x to the power 4 or sin of x to the power 4, something like this, how to do something or some ln thing or some big things. The simple ଜିନିଷ होची sin x ର expansion cos x ର expansion. Expansion କେତେବେଳେ use କରିପାରିବା? When x is close to 0. Not for e to the power x, not for e to the power x. For these three, when x is close to 0, x is a very small number. These three,
will approximate this thing will approximate sin x, this thing will approximate cos x, and this thing will approximate ln 1 plus x when x tends to 0. E to the power x ପାଇଁ ସେଟା e to the power x is always 1 plus x plus x. So how to use this when we have given some limits x tends to 0, ଆମକୁ sin x ଜାଗାରେ a expansion use କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ up to some terms, ନୁହେଁ କି ପୁରା term। आ पर term ଟା ଆମର କଣ minus x to the power 7 upon 7 factorial, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବାଟ ଦରକାର ପଡନଥାଏ। Sometimes we have to use just only x, sometimes x minus x cube by 3 factorial, ଏବଂ most probably ଆଠୁ ବେଶୀ ଯିବ ନା, sometimes x to the power 5, and for cos also something like 1 by this, only these three terms are used, above after that एते यूज करिया दरकार नଥାଏ। ଏବଂ ln x plus ln 1 plus x मध्ये ଆମେ ଦେଖିବା एक्सपेंशन ର କେମିତି यूज करके ଆମେ लिमिट सॉल्व कर परिया। ମୋ ପାଖରେ एग्जांपल मध्ये ଅଛି, ମୁଁ କିଛିଟା प्रैक्टिस प्रॉब्लम मध्ये देखि एक्सपेंशन बेसिस रे ना। एबे ଆମେ प्रॉब्लम्स देखिबा किछिटा। फर्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन कोची इफ yx is equal to x to the power x greater than 0, then y double dash 2 minus 2y dash 2। तो किछि नै, हमको पाखरे समथिंग गोटे y अछि, हमको कंप्यूट कोन करियार अछि, हमको कंप्यूट करियार अछि dy divided by dx, सिंपल। तो हम पाखरे फंक्शन रहिला x to the power x, x to the power x ର डिफरेंशिएशन केमति कंप्यूट करियो, किछि फार्मूला x to the power n रो फार्मूला हम पाखरे अछि, x ln x रो फार्मूला अछि, किंतु x to the power x फर्स्ट रूल रे करिया पय चेष्टा करिवा। फर्स्ट रूल रे जदि हम करिया पय चेष्टा करिवा x plus h to the power x plus h, आको हमें केमिति पुणी अप्रोक्सीमेट करिवा, ताको भी अप्रोक्सीमेट करिवा बहुत कष्ट है। तो दैट्स व्हाई क्वेश्चन देखि कि डिफरेंशिएट करिया पय रस हवा कथा नै। कैन वी सिंप्लीफाई आवर प्रॉब्लम? We are given y is equal to x to the power x. Can we somewhat simplify? The first thing is the concept one or trick one. When there is some exponential things, do log, logarithm use करिवार अछि। केमिति यूज करिवार अछि? Let's see. Y equal to x to the power x. This is given. Y equal to x to the power x. We can take ln both sides. Ln, you know, ln is log e. I am just writing ln because it is short to write. Log e. Ln is log e. So we can take ln both sides. So what will we get? Ln y is equal to ln of x to the power x. Ln y is equal to ln of x to the power x. But we have the formula that this can come to here. So हम पाखरे कोन आसला ln y is equal to x ln x. एबे हमें करि परिबा डिफरेंशिएट। ln y रा डिफरेंशिएशन 1 by y. But हमें जानि छे y is a function of x. Y is a function of x. Y is a dependent variable. तो ln y by x को जते हमें डिफरेंशिएट करबा अकॉर्डिंग टू आवर चेन रूल, जहां हम चेन रूल थिला प्रथमे ln को डिफरेंशिएट करले 1 by yx, तापरे भीतरटाकू y dash x। हम चेन रूल हम यूज करले जो थर्ड रूल थिला, तो 1 by y into y dash is equal to x ln x केमती प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट this constant r derivative, ln x derivative 1 upon x, x into 1 upon x is 1, then ln x constant x variable, ln x into x derivative 1, तो 1 plus ln x। तो हम पाखरे कोन आसेला y dash is equal to y into ln x plus 1, हमको y dash मिलेला। हमको डबल डैश दरकार, तो हमको आउ थरे डिफरेंशिएट कर परिबा। एबेटा सिंपली ही जीव ना, कहीं y dash x हम पाखरे अछि डायरेक्ट, तो डिफरेंशिएट करले y डबल डैश x एवं याकू पुणी प्रोडक्ट रूल हिसाब रे हमें कर परिबा
y को कांस्टेंट माने कि भीतर डिफरेंशिएशन y into 1 by x तापरे 1 plus ln x को कांस्टेंट माने कि y dash तो हम पाखरे y double dash कोन आसला y double dash ला y dash into 1 plus ln x plus y by x so our question now it is solved how we can what we have at y dash 2 and y double dash 2 so we can just put 2 here and I have to calculate y of 2 also then y of 2 is 2 to the power then I can calculate y dash 2 I can calculate y double dash 2 just putting the values 2 here 2 here and 2 here after that I can get to the answer getting to the answer is not my biggest motive more motive kon first concept hame kon janle when exponential when something exponential is given do ln both sides both side रे ln करला पर differentiation रे बहुत सुविधा है in anything if you are solving limits also sometimes it can be useful when there is exponential जतबे exponential अछि both side रे ln करिया पई पड़ियो both side रे ln करला पर differentiation can be easy now let's see another question yx is equal to cot inverse under root of 1 plus sin x plus under root of 1 minus sin x divided by some similar term with a minus x belongs to this then पचारिछि जे dy by dx at x equal to 5 by 6 तो आपको देखिए हमर माने पड़ला जे मु कहितली 6 टा फार्मूला रिमेंबर करिते तो cot inverse x रो फार्मूला थिला 1 by 1 plus x square 1 by 1 plus x square तापर माइनस थिला तापर पुनी भीतर को चेन रूल करिए डिफरेंशिएशन चेन रूल देयर कैन बी वेरी ह्यूज कैलकुलेशन हमको सेया करिया नहीं फर्स्ट थिंग इन द प्रीवियस क्लास फंक्शन में हम कोन कहथि if there is some irrational terms like root minus we just have to rationalize we just have to rationalize तो हमें कोन करिया एठी मल्टीप्लाई करिया तो मल्टीप्लाई करले कोन होबो कि मल्टीप्लाई करले again the same thing will happen ना तळे सिना सॉल्व ही जो ऊपर पुणी रूट रहइबो पुणी cot इनवर्स हमको आउ की चीज भाबिया पे पड़िबो as I मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लेक्चर जदी देखि चंती जदी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मु कहितले द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन ट्रिगोनोमेट्री द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कौन सी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज 1 1 केमिति हमें 1 को कोन लिख परिबा हमें 1 को लिखि परिबा sin square x हमें 1 को लिखि परिबा sin square x plus cos square x handwriting is bit 1 is sin square x plus cos square x तो हमको एठी यूज कोन करियो 1 को sin square x लिखले sin square x plus cos square x plus sin x किछि नै another important formula मु कोन कहितली आ गोटे important formula sin 2x sin 2x is 2 sin x into cos x तो ए दुटा फार्मूला को यूज करके हमको सॉल्व करना है this is not a differentiation question it is mainly trigonometry but this is a differentiation question observation again I am putting more emphasis on observation भलो बाबा 1 plus sin x कोन लिखि पारि 1 को कोन लिख पारि 1 को लिखि पारि sin square x by 2 plus cos square x by 2 sin x को म लिखि पारि 2 sin x by 2 cos x by 2 हम पाकर कोन आसला 1 sin x square by 2 cos x square by 2 sin x को लिख पारि 2 sin x by 2 cos x by 2 this एटा के familiar जणा पड़तो this is a square plus b square plus 2ab so this is just sin x by 2 plus cos x by 2 the whole square similarly हमें देखिबा 1 minus sin x होची sin x by 2 minus cos x by 2 रो होल तो हम पाखरे जो अंडर रूट थिला अंडर रूट एबे आराम से पड़ अंडर रूट ऑफ 1 plus sin x by 2 plus cos x by 2 mod mod काहे कि हमें जानी ने पॉजिटिव ना नेगेटिव सिमिलरली sin x by 2 minus cos x by 2 mod तो हमें mod केमती हटेबो information given in question
x belongs to this range जतबे x ए रेंज को बिलोंग करथिबो सेतबे हमें ग्राफ किबा वैल्यू देखि कि हमें जानि परिबे जे कोनटा बड़ कोनटा छोट से हिसाब रे हमें देखि कि हमें मॉड रिमूव कर परिबो मॉड रिमूव करला पर हम देखिया जे this big term simplifies to only tan x by 2 तो आम पाखरे कोन रहला yx is equal to cot inverse tan x by 2 is equal to pi by 2 minus tan inverse tan x by 2 एना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री रो फार्मूला सब कांसेप्ट यूज होला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तो tan inverse tan x by 2 दिस रेंज पे x by 2 तो आम पाखरे फंक्शन असला दिस y dash x कोन -1 by 2 फॉर एनी वैल्यू x ऊपर डिपेंड ही करिवन तो आम पाखरे क्वेश्चन कोन पछ x 5 by 6 आवर आंसर विल बी -1 तो हमें कोन सिखले दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ए भाया आगो को भी हमें सॉल्व करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन थिला डिफरेंशिएट y x अलग अलग अछि हमें देखो आराम से डिफरेंशिएट किंतु जदी सेम अछि तो हमें ताको डिफरेंशिएट केमति करिया ताको देखिया पई हमको देखिया पई पड़िया हमें केमति करते सिंपल किछ नै हमको dy by dx निकाल करियार अछि मो कोन कहितली फर्स्ट क्वेश्चन रे कोन हमको सिखिया पई मिलला एक्सपोनेंशियल डू ln एक्सपोनेंशियल ln हम पाखरे अछि x टू द पावर y हम पाखरे अछि y टू द पावर x मु u माने नेली समथिंग x टू द पावर y को गोटे वेरिएबल माने नेली y टू द पावर x तो मते आकु आर डिफरेंशिएशन दरकार तापरे मो टोटल इक्वेशन रो डिफरेंशिएशन करि के म जानि परबे जे कोन मोर होल तो मु x टू द पावर y तो ln नेली ln u इज इक्वल टू y ln x सही सिमिलर वे जेमिति x टू द पावर x पई करथले सिमिलर वे कला परे खाली एथे टिक के अलग देखिबा पई पडियो जे y इज ए फंक्शन ऑफ x तो y को कला परे y डैश x जोड़िया पई पडियो तो u डैश मते ई हिसाब रे करि के या पई and when I x ln y differentiation y dash upon y खाली y dash upon y कहीं y is a function of x so now original equation को differentiate कर हम यहाँ पर इसे x equal to y equal to so this question is just a revision of the previous question you can do it again also I am not giving more emphasis to it best time देबी नहीं किंतु the first thing is implicit हो कि मैं explicit हो exponential थिले exponential करिवा एवं जदि implicit अछि then try to do the whole thing like x y plus x square y square जहां भी अछि पूरा थिंग को डिफरेंशिएट करिया पे चेष्टा करियो जेमति कि प्रोडक्ट रो y रो डिफरेंशिएशन y डैश x रो डिफरेंशिएशन 1 पूरा करिया पे चेष्टा करला परे तापरे फाइनल जहां वैल्यू आछो वैल्यू पुट करके हमें डायरेक्ट सॉल्व कर परियो हमको डायरेक्ट dy by dx रो क्लोज फॉर्म दरकार नहीं क्लोज फॉर्म नथिले मध्य एठारे क्लोज फॉर्म पाया बहुत कष्ट dy by dx किंतु क्लोज फॉर्म नथा पछे किंतु हम वैल्यूज पाइ आराम से this is another question for your practice I have not done more a solution rakhini you can take the question and practice and later tell me the answer I think in the chat if possible now this question in differentiation previous lecture jaman dekhte this is something like a functional equation seems like functional equation f of x plus y is equal to 2 to the power f x f of y 4 to the power y f of x तो हमको पता है f dash f4 by f dash तो हमको कौन कंप्यूट करार अछि f of x सिंपली हमको कंप्यूट करार अछि f केमिति करियो फर्स्ट थिंग इंडक्शन लागू नि का इंडक्शन वाला किछि वैल्यू लागू रेंज रिड्यूस रेंज तो जाना नहीं रेंज रिड्यूस करी होबो देन सॉल्विंग trick very important trick elimination another important trick probably I missed it in functional equation part elimination how to eliminate something here this function is both in x and y this function is in x and y तो मु कोन करबी I can just replace y as x and x as y तो मो पाखरे कोन आसी f of y plus x is equal to this is 2 to the power y f of x plus 4 to the power x f of y then 8 term टा किंतु x plus y और y plus x सेम तो कटि जीवो तो हमको यार एडवांटेज नबार अछि केमति f of x plus y is this मो पाखरे f of y plus x अछि सिंपल दिस
दुईटा को जदि मु माइनस करिवि दिस माइनस दिस मो पाखरे एया आसीबो 4 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर y into fx is equal to 4 to the power x minus 2 to the power n is to f of x. Simple. This is cancelled. Then I can just rearrange x term one side, y term one side. F of x by 4 to the power x to the power x is equal to f of y by 4 to the power. तो मु assume कली जे मो पाखरे गोटे जनरलाइजेशन अछि जे f of x by 2 to the power 4 to the power x minus 2 to the power x सेटा समस्त पय सेम अछि तो मु ताको कहि देली समथिंग लैम्बडा जनरलाइज मु कर परिबी फंक्शन पे जे फंक्शन ऑलवेज जनरलाइजेशन हैपन तो fx मोर आसला लैम्बडा into 4 to the power x minus 2 to तो लैम्बडा केमती फाइंड करिवि information अछि if f of 2 is equal to 3 यदि f of 2 equal to 3 हम पाखरे अछि तो I can just put the value and find lambda is equal to 1 by 4 lambda equal to 1 by 4 find करला परे fx is equal to 1 by 4 4 to the power x minus 2 to the power x then just simply differentiate कर देमु a to the power x the differentiation is a to the power x ln and this is exercise you can do ln y equal to a to the power x ln y is equal to this then easily solvable very easily solvable then after that you can find so this question differentiation रे एई प्रकार रे क्वेश्चन आसीबो फंक्शनल इक्वेशन रहइबो किबा डिफरेंशिएट करिया पय कहिबो किबा इम्प्लिसिट फंक्शन रहइबो ताको डिफरेंशिएट करिया पय कहिबो तो डिफरेंशिएशन रे मेनली ए टाइप रे क्वेश्चन आस्ते एबे हम जिवा लिमिट आड फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 cos of sin x minus cos x divided by x to the power 4 cos of sin x जाउची 0 को तो cos of sin x cos of 0 1 cos of 0 1 1 minus 1 is 0 x to the power 4 is 0 हम पाखरे अछि 0 by 0 तो हमें कौन यूज करिवा L हॉस्पिटल्स बट मु जेमिति कहितली x to the power 4 x to the power 4 अछि माने कांस्टेंट टर्म को दूर करिया पय हमको एटलीस्ट चारटा डिफरेंशिएशन एटलीस्ट चारटा ऊपर टर्म cos of sin x अछि cos of sin x को चारि थर डिफरेंशिएट करला बेलकू गोटे विराट टर्म एते बहुत cos of sin x sin cos x बहुत बड़ा टर्म आस्थियो कौन यूज करिवा नेक्स्ट थिंग 0 by 0 जहां भी हो cos sin x x tends to 0 अछि x tends to 0 अछि हम पाखरे sin x अछि हम पाखरे cos अछि x tends to 0 sin अछि cos अछि x tends to 0 sin cos रे कोन गोटे वैल्यू को हमें अप्रोक्सीमेट कर परिबा यूजिंग द एक्सपेंशंस that's why expansions are very necessary if you use expansion in your exam बहुत टाइम सेव होबो क्वेश्चंस रे एवं बहुत शीघ्र होइता है तो हम पाखरे cos अछि हम पाखरे sin अछि हम पाखरे x टेंड्स टू 0 अछि हमें कोन यूज करबे एक्सपेंशन हमको कौन कौन एक्सपेंशन दरकार गोटे cos x दरकार दिस इज 1 minus x square by 2 factorial by x square by 4 factorial हमको sin x दरकार x minus x cube by 3 factorial and जहां भी रहला हमको दरकार cos of sin x केमति लिखिबी जस्ट x को sin से रिप्लेस कर देबी 1 minus sin x by square by 2 factorial sin x 4 factorial काहे कि मु एमति लिख परिबी जा when x tends to 0 sin x भी tends to 0 sin x ग्राफ जदि देखथिबा हमें when x tends to 0 sin x is tends to 0 तो से पे cos रे एक्सपेंशन में sin cos of sin x लिखिबे तो हमर लिमिट कोन हे गला 1 minus this by मु आगो को आउ टर्म काहे के लिखिली मु आगो को टर्म काहे के लिखिली काहे के लिखिली ना the first thing is x to the power 6 ର ଟର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ डिनोमिनेटर रे ओनली x to the power 4 जाय टर्म अछि बहुत इंपोर्टेंट जिंस मु जदि एठी x to the power 6 ର टर्म लिखिबी एक्सपेंशन रे डिनोमिनेटर रे x to the power 4 तो मु x to the power 4 इजीली कॉमन नहीं परिबे और जहां बाकी रहि जिवो x स्क्वायर कि x ताको मु आराम से 0 कर दे पारि काहे कि x टेंड्स टू 0 रे sin x रो मध्ये मु काहे कि लिखिली sin x to the power 6 जदि माइनस sin x to the power 6 sin x रो एक्सपेंशन में 1 नहीं sin x स्टार्टिंग होची x तो जते मु r to the power 6 करबी द लीस्ट पावर कोएफिशिएंट कोन आसीबो एक्सपेंशन पे x to the power 6 x to the power 6 रो लीस्ट पावर कोएफिशिएंट आसी परियो नै
I will repeat. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ sin x to the power 6 କରିବି तो এই expansion रे binomial idea नेले least power term will be x to the power 6 x to the power 6 but हमको highest केते नहीं दरकार x to the power 4 ने that's why I have only written up to this 1 minus sin x square by 2 factorial plus and this is also up to 4 8 बेसी लिखिया दरकार and sin x को जते हम मध्ये expand करी sin मध्ये मध्ये similarly देखिया ପାଇଁ पड़ियो जते म sin x रो स्क्वायर को देखिबी सेतबे I have to take both the terms x x cube by 3 factorial x fifth by x to the power 5 का दरकार नहीं 5 संगरे जहारे मल्टीप्लाई करले 4 रो देखिया किंतु मते 3 नेबा ପାଇଁ पड़ियो काहे r स्क्वायर करले 2ab टर्म रे x to the power 4 रो टर्म आस्था x to the power 6 जो आसीबो स्क्वायर करले म ताको नेग्लेक्ट करबे similarly sin x to the power 4 रे मते खाली x to the power 4 ही नेबा ପାଇଁ पड़ियो काहे कि ना x ता परे जहा भी टर्म आसीबो ता सब x to the power 4 रो बेसी हिथियो लाइक x minus this the least term जहा भी आसीबो एटारे x to the power 4 रो सब बेसी आसीबो तो मते खाली x to the power 4 नेले हिची तो मो लिमिट कोन हेगला 1 minus r square plus this minus this तो लिमिट तापरे सिमिलर टर्म्स को कैंसिल करला परे मो पाखरे कोन बचला x to the power 4 by 6 a2 कटला परे x to the power 4 by 6 divided by x to the power 4 simply x to the power 4 कैंसिल हे जो मो पाखरे बचिबो 1 upon 6 1 upon 6 तो we can use expansion is very powerful हमें देखिए this is the answer expansion एते पावरफुल जे हमें बिना L hospital यूज करके don't use L hospitals everywhere एटारे L hospital यूज करले बहुत लेंथी क्वेश्चन ही था बहुत सिंपली एक्सपेंशन यूज करके मैं आंसर पर पहुंच पारियो नेक्स्ट बैक टू बेसिक बेसिक कौन था फर्स्ट स्लाइड आवर फर्स्ट स्लाइड LHL RHL लिमिट एग्जिस्ट करिवो लिमिट एग्जिस्ट करिवोनी क्वेश्चन कौन कुछ लेट a be an integer such that limit this exists limit exists जत्ते भी क्वेश्चन रे आसिला लिमिट एग्जिस्ट टर्म क्वेश्चन रे जते भी लिमिट एग्जिस्ट लिखा हला ता माने हमको कंप्यूट करियार अछि LHL हमको कंप्यूट करियार अछि RHL हमको कंप्यूट करियार अछि RHL हमको करियार अछि कंपैरिजन यदि इक्वल टू लिमिट एग्जिस्ट यदि नॉट इक्वल टू लिमिट डजंट एग्जिस्ट काइना लिमिट पचारछि एग्जिस्ट के नै पर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक अछि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समस्त जणा अछि तो पचारछि जे लिमिट एग्जिस्ट देन वैल्यू ऑफ a केते हबो तो हमको जस्ट LHL और RHL कंप्यूट करे LHL केमती कंप्यूट करबा LHL लिमिट x टेंड्स टू 7 LHL पाई मु लिखिबी x को 7 माइनस कोन 7 टू जस्ट छोटो समथिंग लाइक 6.6.999 बहुत सारा 6 जा भी लिख परियो 1 minus 7 minus रो इंटीग्रल पार्ट आको केमिति लिखिबी सिंपल जिनसटी होची जदी मो पाखरे दिस इज ए रिजल्ट मो पाखरे अछि समथिंग x plus y रे इंटीग्रल पार्ट जेठी म जानि जे y होची ओटे इंटीजर समथिंग x plus 1 रे इंटीग्रल पार्ट और x plus 2 रे इंटीग्रल पार्ट तो मु डायरेक्ट लिखि परिबी x plus 1 रे इंटीग्रल पार्ट को मु डायरेक्ट लिखि परिबी 1 plus x रे इंटीग्रल पार्ट x plus 1 रे इंटीग्रल पार्ट को मतलब a लिख परिबी काई इंटीजर रे इंटीग्रल पार्ट सब वे फुल आसीबो ताको हम कैलकुलेट तो 1 minus 7 रे इंटीग्रल पार्ट लिख 1 minus एठी लिखियो टिके इंपोर्टेंट I can also tell you another 1 minus 7 minus you can use this or 1 minus 6.99 केते आसीबो minus 5.9999 आसीबो minus 5.99
तो -5.999 रो इंटीग्रल पार्ट केते 6 तो आमे लिख परिया -6 एवं 7 -3a तो एठी हमें जानछे जे 3a इज इंटीजर तो मैं आपको डायरेक्ट लिखि परिबी 7 माइनस रो इंटीग्रल पार्ट -3a 7 माइनस रो इंटीग्रल पार्ट केते 6 6.999 6 6 में तो एलएचएल मोर असला 24/6 - 3 सिमिलरली मो कंप्यूट कर परिबी आरएचएल मोर आसीबो 25/7 - 3 आरएचएल कंप्यूट कर देखिए 7 देखिया पई जस्ट यू कैन टेक 7.00001 something like that you can take or you can use this RHL equal to LHL equal to RHL होगा लिमिट जो कि कोई क्वेश्चन में कोई से लिमिट एग्जिस्ट सेम है LHL equal to RHL होगा that implies this हमें जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करले देख परिबा जे a equal to -6 बहुत इजी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होला जस्ट बेसिक्स हमर कोन LHL equal to RHL कांसेप्ट कोन GIF फंक्शन जते बेले भी थिबो जदि लिमिट एग्जिस्ट भी न कहि छि क्वेश्चन रे एमिति ऑप्शन दे दियो लिमिट रो वैल्यू दे दिला चारटा ऑप्शन दे दिला कि दिस वैल्यू एंड ऑप्शन डी मोबाइल दे दियो डजंट एग्जिस्ट ऑप्शन बी दे दियो डजंट एग्जिस्ट तो हमको जीआईएफ फंक्शन दे दियो सब जीआईएफ फंक्शन दे एलएचएल कंप्यूट करिवा आरएचएल कंप्यूट करिवा तापरे डिफरेंटली देखि ताको जदी सेम आस्ति ताले लिमिट वैल्यू करिवा जदी डिफरेंट आस्ति ताले डजंट एग्जिस्ट दिस इज आवर कांसेप्ट नेक्स्ट this is a practice question for you for expansions you can use expansion kahar kar expansion use karibe e to the power x ro expansion cos bx ro expansion e to the power minus x ro expansion cos x ro practice question you can practice another practice question wanna use L hospitals now name it एथि क्वेश्चन ने जणा पड़ছে L hospital यूज करी हबो 0/0 फॉर्म अगेन अछि किंतु I will still tell once try using expansion please once try using expansion थोड़े try करला परे तापरे L hospital try करिए expansion थोड़े try करिए another question this question एक क्वेश्चन रे कोन यूज करिवे x tends to 0 अछि cos अछि cos क्यू अछि sin अछि ln 1 plus x मु कहिथिले ln 1 plus x when x tends to 0 तीनटा जाक जिनिस मु कहिथिले जे x tends to 0 बा तीनटा जिनिसर एक्सपेंशन थाए sin cos ln 1 plus x तीनटा जाक जिनिस एठी देछि तीनटा जाक जिनिस यूज करके देखिले जे एक्सपेंशन तो ए जे तीनटा क्वेश्चन है एक्सपेंशन द प्रैक्टिस में you have to practice expansion because expansion is very important for computation of limit ए तीनटा क्वेश्चन भलो भाबे प्रैक्टिस करिए next we will see some other questions series sum in limits तो लिमिट्स रे मते सीरीज आस्ता है गोटे सीरीज देथियो तार समेशन देथियो पछरिया लिमिट तो फास्ट कोन करियो हमें लिमिट रा अलजेब्रिक प्रॉपर्टी यूज करियो जे सम यूज करके सॉल्व करिवा ना सीरीज सॉल्व करिया first thing you have to solve the series for any series question in limit you have to solve the series or I can say you try to solve the series सब बेले सीरीज सॉल्व है न था तब किछि किछि अलग तरीका भी था एक एलएन नबा लाइक डिफरेंट तरीका था किंतु फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व द सीरीज जदी सीरीज सॉल्व होची सॉल्व कला पर देन यू क्वेश्चन कोन कोची पॉजिटिव कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन d is greater than 0 is the common difference तो हमको कोन करियार अछि ना के कंप्यूट करे अछि बहुत इजी फर्स्ट थिंग अगेन रेशनलाइजेशन कांसेप्ट 1 by under root of a plus under root of a by 2 अछि तो मु ऊपर तो मल्टीप्लाई करबी root a2 minus root a1 तो मो पाखर कोन आछला root a2 minus root a1 divided by a2 minus a1 a2 minus a1 कोन अछि मो पाखर a2 minus a1 is d काई कुहाय जे माने ap रो कंसेक्यूटिव टर्म्स a1 a2 a3 तो a2 minus a1 हला d तो तापरे मोर लिमिट कोन आसीला ताले limit n tends to infinity root d by n
जहा कि रूट डी बाय एन एठी बाहर थिला 1 by d मु समस्त कॉमन नै नेली 1 by d मु समस्त कॉमन नै नेला परे मो पाखरे रहला रूट a2 minus रूट a1 plus रूट a3 minus रूट a2 plus root an minus root n function. This is similarly like कटि जीव सब root a2 minus root a2 कट जीव root a3 minus समथि कट जीव तो मो पाखरे फाइनल रहिला limit n tends to infinity d by n into 1 by d into root an minus root a1. Question कहछि a1 भी n positive terms. How n tends to infinity and d is also positive. तो an जो हमर वैल्यू रहला an होछि an will be tends to infinity. a1 is some positive number. तो मु कोन करबी ना मु एठी कोन करछि मु सॉल्व कलावे मु an minus this को मु एको ओनली नेनली समथिंग लाइक रूट an बिली किंतु इग्नोर करबा दरकार नै मु इग्नोर काई कर देले दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू कंपैरिजन टू इंफिनिटी ignore no kale just you what you have to do inside this you have to just write root a1 and you can solve but finally when you means like divide multiply by n this term will come 0 because this is a positive finite number and this is some infinite number that divide karo obviously 0 आथिबो तो फर्स्ट रो जदी a1 को इग्नोर कर देले किछ असुविधा नै a1 को इग्नोर करला परे कोन हबो an मु जानिची an कोन an is a1 plus n minus 1 into d स्क्वायर रूट भीतर को मु सब नै गेले d स्क्वायर तापरे दिस को आको सॉल्व करले आ स्क्वायर रूट मैं लिमिट ऑफ दिस रा स्क्वायर रूट I can just compute limit of this then do the square root मु परे स्क्वायर रूट कर परबी आराम से so this is our limit n tends to infinity this is a very easy L hospital to use मते n रेस्पेक्ट रे डिफरेंशिएट कर जाय छै मते n रेस्पेक्ट का n हो जाय हमर बहुत इजीली n रेस्पेक्ट रे डिफरेंशिएट करले d square सिमिलर थिंग जब तमे n रेस्पेक्ट रे एठी डिफरेंशिएट करले होता a1 लिखा था तो सदा 0 ही लिखा था तो सेही हम फास्ट लो a1 भी n रेस्पेक्ट रे डिफरेंशिएट करले लिमिट n tends to d square by d square is 1 tar square root 1 always take positive square so this is not a difficult question sometimes you first try to solve the series in the limits then do the question this is our final question for today this is a very good question root n square minus n minus 1 plus n alpha plus beta n tends to infinity this tends to infinity this also seems to be infinity this is some positive is equal to 0 the question is something seems to be so we have to make one thing negative like we don't have to make beta negative कले किसी लाभ नहीं n alpha को नेगेटिव करिया पाई पड़ो काई एठी जो पॉजिटिव इंफिनिटी आसीबो ताको नेगेटिव तो we cannot guess I am just saying the intuition of this question कि alpha नेगेटिव आसीबो हमको पचरे छी 8 alpha plus beta this limit is equal to 0 एटा क्वेश्चन रा टाइप होची लिमिट रे वैल्यू हमको दिया छी we have to compute alpha and compute beta or somehow compute alpha plus beta what to do first thing is तबे infinite रो लिमिट थिबो मु सबे कहै छी जदि तय इरेशनल थिबो तय इरेशनल थिले प्लस किबा माइनस थिले ताको प्लस माइनस करके ऊपर मल्टीप्लाई करी when you have limit tends to infinities in some cases just ऊपर इरेशनल को मल्टीप्लाई करिया पड़ियो ताको रेशनलाइज करकी जस्ट ऊपर टाको रेशनलाइज करकी तय इरेशनल आडिया this is a very non trivial step किंतु sometimes करिया पई पड़ियो like I have this n square minus n minus 1 plus n alpha plus beta just multiply by minus n this minus n alpha plus beta just मु ako plus n alpha plus beta करबी एवं एठी minus n alpha plus beta करबी एवं
डिनोमिनेटर रे मोठी टिके भूल लिख दी डिनोमिनेटर रे इट इज माइनस इन डिनोमिनेटर इट इज माइनस हियर आल्सो इट इज माइनस n alpha plus beta minus n alpha plus beta. That doesn't matter in denominator, I think, but you have to be careful. I more careful ରହିଲେନି ମୁଁ ଏଠି minus multiply କରିକି ତଳେ plus ଲେଖିଦେଲି. You have to solve it easily. Now multiply କଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ numerator ରେ n square ର coefficient ହଉଛି 1 minus alpha square. Numerator ରେ n square ର coefficient is 1 minus alpha square. Denominator ରେ n square ର coefficient ନାହିଁ because n square ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ square root କରିବି maximum n ର coefficient ଏଠି ବି n ର denominator ରେ n square ର coefficient ନାହିଁ. limit exists and limit is 0. limit 0 ସେଇ ପାଇଁ ମତେ numerator ରେ n square coefficient କୁ 0 କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ. Then implies 1 minus alpha square is 0. That implies alpha is plus or minus 1. First thing we get. तो alpha किंतु 1 ही परिवन जदि एई मु कहितली alpha have to be negative. I make 1 काई जदि alpha positive होला एटा पूरा infinity पळो. That implies alpha equal to minus 1. After that, we have to divide the numerator and denominator by n. काहेकि मु divide करछि ना divide कर देले जो टर्म गुडा n रु छोटो थिबो माने infinity टेल कोन दे सेबडा 0 हे जिवो तो हम पाखरे आउ कंप्यूटेशन बहुत सहज हे जिवो तो मु n रे डिवाइड करबी this is minus मु जेना मिक्स करथिन this is minus this is also minus तो minus this n रे डिवाइड करले this is square root मध्ये को n चली गेले n square डिवाइड होला तो मु कोन पाइली -1 plus this alpha some constant term is equal to 0 जदि गोटे constant term 0 होची this is 1 minus alpha that's why this is 2 1 plus alpha थिले 0 हे थाता 1 minus alpha तने ऊपर टर्म टा 0 that implies 1 plus 2 alpha beta is 0 1 plus 2 alpha beta is 0 म पाखरे alpha अछि -1 तो म beta पाइ गेली 1/2 now I can just compute 8 alpha plus beta is 1/4 तो आमे सिखिले कोन सिखिले जे लिमिट रे जतबे इंफिनिटी पर्यंत थिबो we can just do multiplication and do rationalization आमे आउरी सिखिले जे डिफरेंट टाइप रे लिमिट्स थाय किछटा एक्सपेंशन यूज करबा सिखिले expansion is very important in this question you have to practice expansion I have also given you the practice question you can just see them thank you sir finished sir हो गया